वेलकम बैक दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हमारे पास एक मैनुअल चेंज ओवर स्विच और उसके कनेक्शन करने वाले हम एनर्जी मीटर के साथ और जनरेटर के साथ। तो सबसे पहले मैनुअल चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन को समझते हैं कि कनेक्शन किस तरीके से किए जाएंगे एनर्जी मीटर के साथ और जनरेटर के साथ। सबसे पहले जो मैनुअल चेंज ओवर स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट के बारे में जान। सबसे फर्स्ट में 2 पॉइंट न्यूट्रल के लिए हैं और 2 पॉइंट फेस के लिए हैं। ऊपर वाली साइड पे जो फर्स्ट न्यूट्रल पॉइंट है उसके साथ एनर्जी मीटर के न्यूट्रल पॉइंट को मिला देंगे। जो फर्स्ट फेस का पॉइंट है उसके साथ एनर्जी मीटर के फेस पॉइंट को मिला दें। और इसी तरह नीचे वाले पॉइंट में जो फर्स्ट 2 पॉइंट हैं वो न्यूट्रल के हैं, जो उसके साथ 2 पॉइंट हैं वो फेस के हैं। जो फर्स्ट न्यूट्रल पॉइंट है उसके साथ जनरेटर के न्यूट्रल पॉइंट को मिला देंगे। जो फेस का फर्स्ट पॉइंट है उसके साथ जनरेटर के फेस पॉइंट को मिला देंगे। न्यूट्रल का जो दूसरा पॉइंट है ऊपर वाली साइड में और नीचे वाली साइड में, उन दोनों को वायर के साथ मिला देंगे। फेस का ऊपर वाला दूसरा पॉइंट है और नीचे वाला दूसरा पॉइंट है उसको एक वायर के साथ मिला दें। न्यूट्रल पॉइंट का जो दूसरा पॉइंट है और इसी तरह फेस पॉइंट में जो दूसरा पॉइंट है, उन दोनों से हम फेस और न्यूट्रल लेकर जो हमारा आउटपुट पे लोड होगा उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जब मैनुअल चेंज ओवर स्विच के हैंडल को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा लोड होगा वो एनर्जी मीटर पे शिफ्ट हो जाएगा। जब हैंडल को हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा लोड होगा वो जनरेटर पे शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हम मैनुअल चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन करते हैं एनर्जी मीटर के साथ और जनरेटर के साथ। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।